हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेट्रो लाइन 7 जो दहीसर ईस्ट से शुरू होकर अंधेरी ईस्ट तक चलती है और जिसकी कुल लंबाई 16.5 किलोमीटर की है और इसमें कुल 13 स्टेशन है का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन आज की वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ मेट्रो लाइन 7A के बारे में, जो अंधेरी ईस्ट से चालू होकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तक जाने वाली है। जो हमारे अंधेरी ईस्ट से चालू होकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ तक चलने वाली है। और इसकी हम टोटल लंबाई के बारे में बात करें तो इसकी कुल लंबाई होगी 3.17 किलोमीटर का होगा और जिस पे 2 स्टेशन का निर्माण किया जाना है। पहला स्टेशन होगा हमारा एयरपोर्ट कॉलोनी जो पूरी तरह से एलिवेटेड होगा और दूसरा होगा हमारा छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो पूरी तरह से अंडरग्राउंड टनल के रूप में बनाया जाएगा। यदि हम इसकी टोटल कॉस्ट के बारे में बात करें तो इसकी टोटल कॉस्ट है 6,607 करोड़ रुपीज़ है और इसको जे कुमार इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। इस लाइन को बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जो भी लोग वेस्टर्न हाईवे का यूज करते हैं एयरपोर्ट पहुंचने के लिए तो उसमें पता ही है कि कितना रश होता है, तो उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा। और ये मेट्रो लाइन जो है अंधेरी ईस्ट में मेट्रो लाइन A को कनेक्ट करेगा और मेट्रो लाइन 7 को कनेक्ट करेगा। और वही बात करें हम यदि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो ये मेट्रो लाइन 3 को और 8 को कनेक्ट करेगा। पिछला वीडियो मैंने जो मेट्रो लाइन 7 के बारे में बताया था तो उसमें 3 स्टेशन पेंडिंग रह गए थे, जो किशोरी ईस्ट का, मोगरा का और गुंडावाली का। तो अभी मैं आगे से ईस्टर्न लेके और इन तीनों स्टेशन के बारे में अपडेट करता हूँ। You are watching Black Mountain Moto Vlog. Please do like, comment and subscribe to our channel.
You are watching Black Mountain Moto Vlog. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। Watching Black Mountain Moto Vlog. Please do like, comment and subscribe to our channel. Thanks for watching.